Traveling mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here over the edge, feel like I'm floating through
Responding to emails takes time, but not with Grammarly. In a few clicks,
मुझे रिटायरमेंट के बाद हर महीने लगभग 2.5 लाख की इनकम मिलेगी। क्या? कैसे? मुझे भी बता। सिंपल, स्मार्ट प्लानिंग की वजह से। अगर जल्दी रिटायर होने का सपना देख रहे हो और चाहते हो कि हर महीने 2 से 2.5 लाख की इनकम मिले, तो ये प्लान परफेक्ट है। अच्छा, कौन सा प्लान है? एक्सिस मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ एडवांटेज प्लान विद एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट इनोवेशन फंड, जिसने पिछले 5 साल में अप्रोक्स 23.79% का रिटर्न दिया है। वाओ, मतलब अगर मैं आज परचेज करूं तो फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। हाँ, अगर तुमने 2005 में सिर्फ 15,000 का मंथली प्रीमियम पे किया होता फॉर 10 इयर्स, यानी कि टोटल प्रीमियम ऑफ ₹18 लाख, तो 2025 में तुम्हें 2.3 लाख पर मंथ की इनकम मिलती, वो भी अब तो 100 इयर्स ऑफ योर एज। साथ ही 3.9 करोड़ का फंड वैल्यू भी होता, लाइफ कवर, डुअल टैक्स बेनिफिट, अनलिमिटेड फ्री फंड स्विचेस भी मिलते। ये तो कमाल का प्लान लग रहा है। मुझे और डिटेल्स चाहिए, तो फिर
Good evening, distinguished guests, dignitaries, and respected members. As the sun sets outside, we rise inside this hall with renewed energy, collective strength, and a shared commitment to progress. On behalf of the Surgical Manufacturers and Traders Association, it is my privilege to welcome you all to this important and prestigious gathering. This evening is not just another event in our calendar. It is a moment of pride where industry meets leadership and vision meets action. We are deeply honored to welcome our esteemed chief guest, Shri Manjinder Singh Sirsa ji, Honorable Minister of Industries, Government of Delhi. A leader known for his unwavering dedication, Shri Sirsa ji has been instrumental in shaping industrial policy that supports innovation, growth, and entrepreneurship across Delhi and beyond. We also welcome our guest of honor, Shri Mohinder Paul Singh Chadda ji,
renowned religious leader, educationist, industrialist, and philanthropist. I now request everyone to stand for the national anthem, a salute to our unity, pride, and patriotism. Please be seated. A gathering of this stature is graced by individuals who have tirelessly contributed to the growth and success of our industry. Shri Manjinder Singh Sirsa ji, Honorable Minister of Industries, Government of Delhi, a visionary leader guiding industrial progress. Shri Mohinder Pal Singh Chadda ji, a renowned industrialist and philanthropist whose commitment to industry and society inspires us all. Shri Rajesh Sahani ji, President of Surgical Manufacturers and Traders Association, the driving force behind our collective growth. Shri Ramesh Bhasin ji, Chairman of the Land and Building Committee, SMTA, an expert shaping the infrastructural backbone of our trade. Shri Harpreet Singh ji, Secretary, SMTA, the diligent organizer and backbone of our association. Shri Puneet Bhasin ji, Vice President of SMTA, a dedicated strategist helping steer our association towards new horizons. Their presence here today strengthens our resolve and lights the path ahead. As a mark of our deep respect and heartfelt appreciation, we now proceed to felicitate our distinguished guests who honor us with their presence today. I kindly request Shri Rakesh Sahani ji to present a bouquet, token of our sincere appreciation to our esteemed chief guest, Shri Manjinder Singh Sirsa ji, Honorable Minister of Industries, Government of Delhi. I also invite Shri Ramesh Bhasin ji to come forward and join in presenting a small memento and a traditional shawl to Sirsa ji as a mark of respect and admiration. May I please request Shri Rajiv Nath ji to present a small planter, a symbol of growth and prosperity, to Honorable Shri Sirsa ji. I am pleased to invite Shri Ashok Sarin ji to kindly come forward to present a bouquet, token of our sincere appreciation to our guest of honor, Mr. M.P.S. Chadda ji, a distinguished educationist and philanthropist. May I invite Shri Rajesh Sahani ji to present a small memento and a traditional shawl to Chadda ji, symbolizing our admiration and respect. I invite Shri S.K. Narula ji
I invite Shri S.K. Narula ji to present a planter to Chadda ji as a symbol of resilience and lasting affection. Let us all applaud their gracious acceptance as we honor these exemplary leaders for their dedication and service. Every great gathering begins with a warm welcome. And who better to do that than the guiding force behind our association, Shri Rajesh Sahani ji, President of the Surgical Manufacturers and Traders Association. A leader known for his vision, humility, and commitment to industrial harmony, Shri Sahani ji has been instrumental in strengthening the unity and voice of our trade. Sir, I request you to deliver the welcome address. Thank you. Honorable Chief Guest, distinguished guest of honor, and esteemed members and dear friends, good evening. My heartiest greetings and warm welcome to all present here today. It is indeed a matter of great privilege and honor for the Surgical Manufacturers and Traders Association, SMTA, to host this distinguished gathering. Today, we have the extraordinary pleasure of welcoming Sardar Manjinder Singh ji as our honorable chief guest. Sirsa ji serves as a high-ranking minister in the Delhi government, bringing with him a wealth of experience and unwavering commitment to public service. We are equally honored to have Sardar Mahendra Pal Singh Chadda ji as our distinguished guest of honor. Chadda ji serves as president of Shiromani Akali Dal Delhi chapter, and his dedication to community service continues to inspire us all. My heartfelt respect and gratitude to both our distinguished guests for gracing us with their presence today. I extend a warm welcome to all my esteemed colleagues, friends, and fellow members of our fraternity who have gathered here this evening. Today we take immense pride in felicitating Sirsa ji for his exemplary service and recent elevation to ministerial responsibilities across multiple crucial portfolios. His appointment as Minister for Industries, Food and Supplies and Environment, Forest and Wildlife is a testament to his exceptional capabilities, visionary leadership, and unwavering commitment to good governance. Sirsa ji has earned widespread recognition for the selfless service to humanity, particularly through his work with Gurdwara institutions and now through government channels. His outstanding contributions as Corona warrior during the pandemic, providing healing touch and support to countless individuals during those challenging times will forever remain etched in our collective memory. As I look upon Chadda ji, I see a true apostle of Seva and Karmanya, service and action. Despite his advanced years, he continues to inspire us with his unparalleled zeal for serving the community and extending support to all his brethren. His leadership across numerous educational trusts and committees has been instrumental in expanding educational opportunities throughout Delhi. We remain deeply impressed and forever indebted to his selfless service to humanity. Recently, I had the opportunity to witness Sirsa ji addressing a news channel where he outlined his revolutionary plans for existing industrial areas in Delhi and spoke about improving available facilities. His announcement regarding the government's plans to develop substantial industrial land in Delhi has filled us with great optimism. This development aligns perfectly
with our long cherished vision of establishing the SMTA medical device manufacturing hub in Delhi. We had previously submitted this proposal to Sirsaji, and through this platform, I respectfully reiterate our request for the kind consideration and support in exploring the modalities for this development at the earliest opportunity. Today's gathering represents more than just a felicitation ceremony. It symbolizes the strong bond between public service and private enterprise, between governance and industry, and between vision and execution. As we gather here today, in the spirit of fellowship and mutual respect, let us draw inspiration from the exemplary leadership and dedication of our honored guests. Their commitment to public service and community welfare service as a beacon for all of us in our respective endeavors. The presence of such distinguished personalities amongst us not only honors our association, but also strengthens our resolve to contribute meaningfully to the industrial and economic development of Delhi and our nation. I am confident that with the continued support and guidance of leaders like Sirsaji and Chaddaji, our association will scale new heights in serving the medical device manufacturing sector and contributing to the larger cause of public health and welfare. On behalf of SMTA and all our members, I once again express our heartfelt gratitude to our distinguished guests for their gracious presence. May this evening strengthen the bonds of cooperation and mutual understanding between our association and the esteemed offices you represent. Let us now proceed to celebrate this momentous occasion and enjoy the fellowship that brings us together today. Thank you once again, and I wish everyone a delightful evening ahead. Jai Hind. Thank you, Shri Rajesh Sahni ji, for your warm and inspiring welcome. Your words truly set the tone for this special evening, reminding us of the strength and unity that defines our association. We look forward to an engaging and memorable event ahead. Behind every thriving industry lies a legacy of resilience, innovation, and unity, and our trade is no exception. To give us a deeper insight into the journey, growth, and present landscape of the surgical manufacturing sector, I now invite a stalwart of our association, Shri Ramesh Bhasin ji, Chairman of the Land and Building Committee, SMTA. A man of immense experience and foresight, Shri Bhasin ji has played a key role in shaping the infrastructure and stability of our trade ecosystem. Sir, we request you to enlighten us with your words. धन्यवाद मास्टर ऑफ सेरेमनी, आदरणीय उद्योग मंत्री जी और आज के गेस्ट ऑफ ऑनर MPS चड्डा जी, आपका इस स्वागत समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपनी प्रधान राजेश साहनी जी की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को इस प्रोजेक्ट के लिए चेयरमैन बनाकर और आप लोगों के सहयोग से जो मुझे इतना सहयोग मिला है, जिसकी वजह से आज ये एक इवेंट हम लोगों ने अरेंज किया है। मैं इसके लिए मंत्री जी का बहुत ज़्यादा आभारी हूं, क्योंकि उसने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाल कर और इस प्रोग्राम को और सुयोजित किया है। मैं जानता हूं आप लोग जिस मकसद से यहाँ बैठे हैं, उसके लिए आप चाहते होंगे कि मंत्री जी यहाँ जल्दी से जल्दी बोले। मैं आपका समय ज़्यादा ना लेके सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा मनजीत सिंह जी से, वो आएँ और थोड़ा SMT के बारे में उसकी रूपरेखा बताएं। जसवीर जी से, सॉरी, जी से आएँ और थोड़ी रूपरेखा दें, और उसके बाद आपकी उत्सुकता को जैसा भी होगा मंत्री जी आपको
उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। आइए। Honorable Minister Sardar Manjinder Singh Ji Sirsa, respected MPS Chadda Ji, our President Rajesh Sani Ji, Chairman Shri Ramesh Bashin Ji, my colleagues on the dais, esteemed guests, and members. I shall start briefly with the history of surgical instruments. The history starts in United India's city of Sialkot. Sialkot at the time of World War I was a center where British Army used to get its metal firearms repaired. During the First World War, the imminent need of by the army for surgical instruments as supplies from West took time to reach South Asia. At that point of time, the British Army encouraged the artisans in Sialkot to start producing basic surgical knives and other simple items for its urgent need. The industry evolved over a period of time with quality and much cheaper instruments compared to the West. Partition of India happened and the Hindu and Sikh families of the region migrated to India and brought with them the trade and artisan skills to India. The surgical trade found its roots in Delhi post-partition, and it was felt by our elders that a forum must be formed for the trade, and thus SMTA came into existence in the year 1951. Times changed and medical science evolved, and so did the healthcare industry. The business that was restricted to mere surgical instruments became a full-fledged medical device industry. Today, the medical device industry is a multifaceted and major product verticals beside the surgical instruments include the electronic equipment, which starts from a simple ECG machine to the most advanced PET scanners. Implants fixed inside the body like cardiac heart stents, eye ophthalmic implants and lenses, and medical implants. The other vertical is consumables and disposables like bandages, cannulas, catheters, perfusion sets, and of course, needles. We have a leader in the needle industry sitting here as a guest, and tubes and stethoscopes and nebulizers, various items. Then the other item is the IVD reagents which are injected in the body when scans are done. So India has been largely dependent on many imported medical devices. Thus, Government of India has been keen to give the fillip to the sunrise sector and to enable world-class manufacturing and to be set up in India. Even the survey report of medical device clusters issued by Government of India in the year 2023, I would like to read the opening statement of that report, sir. Government of India has identified medical devices as the priority sector for the flagship Make in India program and is committed to strengthen the manufacturing ecosystem in the country. On this vision, the government brought in Medical Device Regulation Act in 2017. Initially, about 15 items were covered in this law, and then in year 2020, most of the items were regulated and categorized based on their risk classification. The regulation has necessitated the need to move to proper industrial areas so that adequate space is available, norms and procedures are followed, and world-class quality product is produced in the country. Our trade in Delhi is committed to participate in this new industrial revolution that is happening in the country in the production and quality sphere as far as medical and healthcare industry is concerned. We fully endorse the policies of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on Atmanirbhar Bharat Abhiyan and Make in India campaign. We are happy to learn that the new government in Delhi is very serious in changing the landscape of the city. We welcome your announcement about revamping our existing industrial areas with new roads and sewer lines. I must add here that these industrial areas, which are the backbone of our economy, give so much revenue to the government, creates so much jobs for the people. They have been neglected in Delhi forever.
Many industrial areas in the 60s and 70s that came up were totally neglected. Nobody used to care about them. It is the vision of our leader here and the Chief Minister of Delhi. Between them, they have really taken on this endeavor, and we really welcome this step for the industry. The day we went to invite Mr. Sirsa for this facility, the same evening he announced that about 1,200 acres of land is sitting in the government pool, and in the last 10 years it was totally neglected, and the last government didn't work on this. And very soon the government now will work to develop this new industrial clusters in Delhi. We welcome the resolve to improve the city and your vision to give the city a new industrial area, and the city had always required. I would like to add here, sir, that Delhi had missed the IT revolution that happened in the late 90s and the early 2000s. As most of the IT industry at that time, the infrastructure was developed in neighboring Gurgaon and Noida, despite the huge land banks available in Delhi. This time, we hope that the visionary leadership of the state BJP will not only miss this second industrial revolution, but will also develop model industrial hubs in the city for existing and thriving trade. Lastly, we request you to kindly keep in mind the request of the medical device fraternity in Delhi, spearheaded by SMTA, and plan and allot the medical device hub in the city. The new clusters should be developed on a hybrid model, where besides the industrial plots, flatted factories for small artisans, warehousing facilities should also be developed. There should also be space for commercial activities, and shop-cum-office plots may also be planned. This will enable a comprehensive coverage of the manufacturing and trade at one location and will benefit the micro and small sector. In the end, I would only like to add, sir, that Modi ji's surgical strike in the past has really given a lot of pride to the country. So this is your chance to do a surgical strike in Delhi and give us industrial land and help us. Thank you very much. Thank you, Shri Ramesh Bhasin ji and Shri Jasmeet Singh ji, for that insightful and enlightening overview of our trade. A gathering like this becomes truly meaningful when graced by the words of those whose journey is marked by both excellence in enterprise and compassion for society. It is now my privilege to invite a gentleman who has not only built industries, but also uplifted communities, a name synonymous with integrity, vision, and philanthropy. Ladies and gentlemen, please welcome our guest of honor, Mr. M.P.S. Chadda ji, President Shiromani Akali Dal, Delhi State, to share his thoughts and inspire us with his address. Few ladies and gentlemen. Really, I'm looking today the cream of the industry, and especially three generations of Serenes. Sir, we welcome you. Sirsa ji, I'll be very short. That if a particular industry is in one cluster, they cooperate each other. There are very difficulty machines. Some machines are 20 lakhs, 50 lakhs. If it is in one cluster, we can share those machines amongst ourselves. So that is I think this cluster will help not our industries to each other. They share their machines, they share their knowledge, they share their experience, and one thing more, I assure you, sir, since the industry is with you and your purpose is to increase the income of the Delhi state. And if this cluster is given to us, there will be huge collection of GST and income tax and other things that will enhance the respect of Delhi.
And regarding Sirsaji, he understands all these things. Need not that we should tell him what to do and what not to do. Wherever he is, in whatever capacity, he knows from the bottom to top how to change the situations. I have witnessed with him in the Gurdwara Prabandhak Committee. He has traveled almost all over the country, wherever the need is there for our community. And since joining the BJP, I'm very short, he has understood how to develop the clusters, how to develop the personalities. And he has made many persons from the bottom and they have come to the top. So, this industry, I know, Sirsaji, even small scale industry, even let me confirm from myself, I started my industry just in 100 rupees and today has come to 100 crore. So industry is the life of the country, and industry is the only organization which can raise the standard of our country. Sir, with your environments, with your other departments, these days everybody is looking of this hills of Kuda Karkat. He has already planned, and many jagah bamboos are coming on these hills so that it will become a green spot for welcome, for, I can say, for you can attend these places in future as picnic spots very soon. With these words, I don't want to go further. Thank you very much, sir. Sirsaji, you have accepted on behalf of them to be with us. And I hope not only today, till we achieve our goal, you are always with us. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring and thought-provoking address. We deeply appreciate your presence and encouragement this evening. Thank you, sir. Leadership is not about holding a position. It's about creating impact, inspiring confidence, and driving transformation. Our chief guest this evening exemplifies all of this and more. Shri Manjinder Singh Sirsaji, Honorable Minister of Industries, Government of Delhi, is a dynamic leader, a powerful voice for inclusive industrial growth, and a firm believer in empowering entrepreneurs and local businesses. His proactive vision for industry reform and his deep connection with grassroots entrepreneurs have earned him admiration across sectors. It is our honor and privilege to have him amongst us today. Ladies and gentlemen, with a heartfelt round of applause, let us now invite Shri Manjinder Singh Sirsaji to kindly address this august gathering. बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही सम्मानित हमारे सबके आदरणीय सरदार MPS चड्ढा साहब, द प्रेसिडेंट ऑफ श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट एंड ऑल्सो चेयरमैन गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री राजेश सानी साहब, द प्रेसिडेंट द सर्जिकल मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, रमेश बशीन साहब, द चेयरमैन, द पुनीत बरसीन जी, द वाइस प्रेसिडेंट, हरप्रीत सिंह जी सेक्रेटरी, एंड डॉक्टर निधि सलूजा जी, द कोऑर्डिनेटर। तो मैं थोड़ा सब का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरा सम्मान भी किया और मुझे बोलने का मौका दिया। अचानक के कल ऐसा प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है जिसके चलते मुझे अभी माननीय CM साहब के साथ बैठकर और इस सारी ब्रीफ एक प्लान बनाना है, और इसीलिए मैं टाइम तो 5 से 7 बजे तक का दिया था, लेकिन मैं खुद एक ऐसी सिचुएशन में आने के कारण मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे को 20 मिनट में जाना होगा।
तो मेरी 6 बजे की बैठक थी, वहाँ पे 6:02 हो गया। मैं 3 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा, मैं ज़्यादा आपका समय लेना नहीं है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी समस्या है, मेरे पास चल कर आए थे आपके एसोसिएशन से चड्ढा साहब के साथ में, तो मैंने सारा कुछ ढूंढने के बाद आपके लिए एक विकल्प ये है। हम अभी 3 हमारी स्टेट्स हैं जिनको हम अभी बेचने जा रहे हैं। उनका मॉडल ये है कि हमने देखा कि जो स्टेट हम DSIDC डेवलप करती है, लीज होल्ड होता है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, बाद में मेंटेनेंस नहीं हो पाती, बिजली पानी हर तरह का चैलेंज है। अभी उनको पिछले चैलेंजेस को हम ठीक कर रहे हैं, आगे हम आपको भी वही चीज़ थमा दें। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख है कि मैं अक्सर अपनी मीटिंगों में कहता हूँ कि 3-3 जनरेशनें हमारे ऑफिसों के बाहर आते ही थक जाती हैं। कोई फ्री होल्ड कराने के लिए आ रहा है, किसी की लीज़ में प्रॉब्लम है, जबकि उसके माँ बाप ने पूरे पैसे दिए हैं। और मैंने तो अपनी मीटिंग में अक्सर कहा कि अगर मेरे से कोई पूछे अपने परिवार का सदस्य कि मुझे प्लॉट, मैंने को अगर फ्री में भी लीज होल्ड प्लॉट मिलता तो मत लेना, फ्री मत भी लेना, क्योंकि इतना पैसा लेके अपने लिए एक अलग प्रॉब्लम खड़ी कर लोगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 3 स्टेट्स अभी बहुत जल्दी डेवलप करने के लिए मार्केट में ला रहे हैं। उनका मॉडल ये है कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को देंगे, वही उसको डेवलप करें, वही उसको लॉन्ग टर्म मेंटेन करेंगे, वही उसकी प्लॉटिंग करेंगे, वही उसको बेचेंगे, वही उसको मैनेज करेंगे, ताकि एक प्रॉपर मैनेज्ड इंडस्ट्रियल एरिया हो। जैसे आज आप प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स देखते हैं, कोई अरालियास देखता है, कोई मैग्नोलियास देखता है, तो वो क्यों कामयाब हैं? आज नए कंसेप्ट में इंडिविजुअल हाउसेस से ज़्यादा जो है आज उनकी उन वैल्यू ज़्यादा है उन अपार्टमेंट्स की, उन घरों की। वो इसलिए है कि वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी आपको, आपने अपना ताला चाबी खोलना और अंदर आना है, सो जाना है, बंद करके चले आना, इसके ज़्यादा आपको कोई चिंता नहीं है। आपके घर की, आपकी मेंटेनेंस की लेकर, आपके मेहमान आ रहे हैं उनकी चिंता, कॉमन एरियाज, कॉमन पार्टी कहाँ करेंगे, फंक्शन कहाँ, ऐसी किसी चीज़ की आपको चिंता नहीं है। उसी पैटर्न पे हमने अपनी ये नई डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, हमारी बापरोला में एक 81 एकड़ की डेवलपमेंट है, 81 एकड़ की। अगर आप चाहें तो आप खुद भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप खुद पार्टिसिपेट करिए, आप खुद उसको लीजिए, आप खुद ही मेंटेन कीजिए, खुद ही अपने लोगों को जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उनको दीजिए। दूसरी ऑप्शन, जो इनको लेगा उनसे भी आप बात कर सकते हैं कि हम सारे के सारे आपकी 100% हम प्रॉपर्टी में अपनी एसोसिएशन जो है हमारी सर्जिकल इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, वो भी आपको देंगे। जो और अगर आप खुद नहीं लेना चाहते तो आप थर्ड पार्टी जो लेगी, आप उसके साथ भी, उनको तो चाहिए, उन्होंने तो बेचना ही, उन्होंने रखना तो नहीं है। क्योंकि हम अब आज हमने जो जानकारी दी, हम स्थिति में नहीं है कि हम पिछले 10 सालों में जिस तरह से सरकार हमने झेली है, आप यकीन मानना कि जो भी डब्बा खोल के देखते हो खाली पड़ा हुआ है। और कई तो ऐसे खाली पड़े हुए हैं कि अगर उनके अंदर भी कुछ डालना हो तो पहले डब्बे को साफ़ करना पड़ेगा और अलग से पैसा लगेगा। इस तरह के है। बस एक ही जगह है, एक शीश महल और एक ऑफिस, जिसके ऊपर सारा पैसा लग गया। बाकी कोई ऐसी जगह हमारे पास नहीं है जो हम दिखा सकें लोगों को, भाई साहब ये भी देख लो। हमें भी अगर दिखाना पड़ता है तो सीएम का ऑफिस दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो भी केजरीवाल ने बनाया है। हमारे पास दिखाने को भी कुछ नहीं है। घर हम वो दिखाने को तो हम तो यार मतलब रह नहीं सकते। तो दिल्ली में 10 सालों में बहुत नुकसान हुआ है। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है ये, मैं आपको एक अपने दिल से बता रहा हूँ। हमें दुख और तकलीफ, बहुत पीड़ा होती है देखकर पिछले 10 सालों में दिल्ली को किस तरह से दोनों हाथों से लूटने का काम किया गया। और डेवलपमेंट के नाम के ऊपर बिल्कुल कुछ सोचा ही नहीं। एक ही बात सोचता था, एक इंसान एक ही बात सोचता था कि मैं एडवर्टाइजमेंट के नाम पर लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बना सकता हूँ। और ये सच है कि दिल्ली के लोग बेवकूफ़ बने हैं। आप अंदर झाँक कर देख के, मैं को गलत नहीं कह रहा, 2013 में लाइनों में लग के वोट डाली, और आप लोग कभी डिनाई नहीं कर सकते कि आपने वोट नहीं डाली। आपने भी डाली, इनफैक्ट आपके बच्चों ने भी, और आपने ज़्यादा डाली बाकियों से। जो कट्टर लोग एक एक पार्टी के साथ जुड़े थे, उनको लगा बदलाव की आंधी आने वाली। आपका कसूर नहीं है। लाइनों में लग के मैंने 2013 के चुनाव में, जिस दिन मैंने वोटिंग होती देखी थी, मैंने उस दिन अपनी वाइफ को कहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने लोगों को कभी लाइन में लगकर वोटें डालते नहीं देखा। पंजाबी बाग में जो वोट डालने आए हैं, ये कम से कम हमारे लिए तो वोट डालने नहीं आए, वरना मैं तीसरा चुनाव में मैं तो रोज ही देखता था इनको। ये किसी और कारण से आए हैं। तो मेरी वाइफ कहती थी आपकी आदत या शक से देखने की। वो मेरा शक ऐसा था कि वो 12 साल तक बाद में भुगतना पड़ा, 2013 से लेकर 2025 तक। तो मैं आपको जो बता रहा था, बहुत नुकसान हुआ है। अब आप कम से कम, मैं नहीं कह रहा कि दिल्ली एक दिन में ठीक हो गई है, लेकिन आप ये जरूर मानते होंगे, अब आप सड़कों पे होता काम देखते होंगे। डेवलपमेंट के काम शुरू अब हुए हैं जाके। पहली बार टेंडर
अभी हम पूछते हैं स्टाफ से, तो स्टाफ क्या कहता है कि सर 10 साल से काम ही नहीं किया। सर क्या करें, इस डिपार्टमेंट में सर लोग ही नहीं है ना, तो क्या कर रहे थे अब तक? सर काम तो होता ही नहीं था, हमने क्या करना था, अपनी तनख्वाह लेके जाते थे। मेरे पास एक विकास बोर्ड है, ग्रामीण विकास बोर्ड। आप सुनकर हैरान होंगे, उस विकास बोर्ड ने पिछले पूरे 1 साल में केवल 10 लाख रुपए का सामान बेचा है। कितने का? जरा जोर से बोले, कितने का? उसमें एक एमएलए साहब चेयरमैन भी थे, फिर कोई और चेयरमैन बन गए, और एमएलए साहब और चेयरमैन साहब को संभालने का खर्चा पिछले साल का 50 लाख था। विकास बोर्ड वो विकास बोर्ड, ग्रामीण विकास बोर्ड वो विकास बोर्ड, खादी ग्रामीण विकास बोर्ड, जिसके हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पहले नेशनल बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने इतना बदलाव लाया कि हमारे पीएम साहब उनको एलजी के तौर पर लेके आए। एक वो विकास बोर्ड है जिसको इतना आगे ले गए कि उनको एलजी बनाया गया, और एक हमारे मुख्यमंत्री ऐसा विकास बोर्ड छोड़ के गए हैं कि अब मेरा कल एमडी साहब बैठे, मैं इनके साथ बैठा कर रहा था, वो कह रहे मैं शुरू तो करूं, मैं कर सकता हूं इसको कामयाब, पर मेरे को कोई लोग ही नहीं, स्टाफ तो दे दो। तो मैंने 6 लोग हैं मेरे पास अब। मैंने कहा भाई ऐसा है कि अब आप देखिए, कह रहा जी जो 6 लोग हैं वो बेचारों ने खुद ही नहीं कितने 10 साल से काम किया, वो खुद नहीं जानते कि विकास बोर्ड है क्या, ग्रामीण विकास बोर्ड, खादी ग्रामीण विकास बोर्ड है क्या, वही नहीं जानते। ये रियलिटी है, मैं आपको को मजाक नहीं कर रहा, ये रियलिटी है इस दिल्ली के अंदर। अखबारों में काम था, अखबारों में काम। उसने को किताब पढ़ ली हिटलर की, जो हिटलर का तरीका था, किताबों में छापी चलो, हिसाब में छापी चलो, टीवियों पे चलो, काम हो गया, काम हो गया, कहाँ हो गया, हो गया बस, हो गया, हो गया, बहुत हो गया, कहाँ हुआ, बस हो गया, बस हो गया, हो गया, अखबार में हो गया। वो अखबार में हो गया वाला मॉडल था। पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, टूटी सड़कें हैं, बंद। अब आप देखिए, आप पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं कूड़े के पहाड़ और यमुना जी, बस मेरे को इस मौका और दीजिए, मैं खाली कर, इस बार मौका और दीजिए, अगले 5 साल में मौका दीजिए। और इतना भोला बन के बोलता था, सामने वाले सोचते थे इसको पता नहीं, बेचारा ना बेवकूफ़ है बेचारे को ना, अभी पता चला आज। हाँ मैंने भी सुना है यमुना जी का ना, हाँ हम कर रहे हैं जी, हम कर दे, हम मेरे को यकीन हम कर लेंगे जी, एक 5 साल में हम इसको कर देंगे जी। सामने वालों को ऐसे लगता था कि यार ये बेचारे को ना अभी तक पता ही नहीं चला, वरना ये तो बेचारा उसी दिन ही कर देता। और आप देखिए यही कूड़े के पहाड़ हैं। हमने 25 एकड़ जगह, ये जो आप जीटी कनाल रोड पे जाते हैं, इसमें से 25 एकड़ जगह हमने सफाई करके वहां पे बैम्बू प्लांटेशन कर दी है, 25 एकड़। अभी ये मैं पिछले महीने से 2 महीने, आपने अगर याद शुरू किया, ओखला में जाके देखे, ये 4 एकड़ हमने यहां से भी साफ कर दिए। कोई मजाक नहीं है, 4 एकड़ से कूड़े को गायब कर देना, और गायब करके हम कहीं और फेंक के नहीं आ रहे, हम उस कूड़े का, बस मैं आ गया जी, 5 मिनट पहुंच गया, मैं आ गया 5 मिनट में आ गया, बस हम देवे। उस कूड़े को हमने ऐसा नहीं कि और फेंक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस कूड़े को प्रोसेस कर रहे हैं। उस कूड़े में से एनर्जी के रूप में जो फ्यूल निकाल रहे हैं, उसका हार्ड मटेरियल जो है इंगट्स, वो हम सड़कों के ऊपर डालने का काम कर रहे हैं, मतलब उनके नीचे डालने का काम कर रहे हैं। हम इस कूड़े को पूरे के पूरे को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो बस मैं आपसे ये आग्रह करना, मेरी मजबूरी है, मेरे को जाना है, एक बड़ी जरूरी मीटिंग है, बार बार फ़ोन बज रहे हैं। बस मैं आपको कहता हूँ इसका एक बड़ा मैं चाहता हूँ कि आपकी सर्जिकल जो एसोसिएशन है, आपकी सर्जिकल इंडस्ट्री जो है, एक जगह पे आ पाए। अगर आप ठीक समझते हैं तो आप बापरोला एक बार विजिट करिए। इसका आसान प्लान है, हम निकालने जा रहे हैं बड़ी जल्दी, आप ही अप्लाई करिए अपनी एसोसिएशन की तरफ से। हम अभी कल, अगर आपका मन होगा ऐसा करने का तो आप हमें बताइए, हम भी अपनी बोर्ड को कहेंगे कि आपको भी कंसिडर किया जाए, और आप भी अपनी बिड डालिए और आप कंसिडर करेंगे। और मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप खुद ही डेवलप करते हैं या डेवलपर लेके उससे डेवलप कराते हैं तो आपको बहुत अच्छी परमानेंटली आपके मुताबिक चीज़ बन जाएगी। मान लीजिए आज ही आपके पास मान लीजिए 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर्स में से 10 मेंबर चाहते हैं कि मुझे तो 4000 मीटर प्लॉट चाहिए, 10 आज ही कहते हैं मेरे को तो केवल 2000 मीटर का चाहिए। आपके पास 20 लोग हैं जो कहते हैं मुझे फ्लैटेड ही चाहिए। तो आज आप ही अपने तरीके से सारी अपनी एसोसिएशन ही आपकी डिज़ाइन करा पाएगी कि हमारी इस तरह से होना चाहिए ये इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है वो एक तरीका होगा, क्योंकि मैं आपको अभी दिल्ली के अंदर या देश में वो मॉडल रहा नहीं, हम आपको कोई जगह अलॉट करें ऐसा संभव नहीं है। फिर वो जो है एक बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी की तरफ बातें चल पड़ती हैं, और आपको बनाने में, आपको मैनेज करने में बहुत समय लग जाएगा कि हम आपको बना के दें, हमारी DSIDC काम करके दें। मैंने बताया हमारी सरकार तो इतनी लथार्ज 10 सालों में पिछले छोड़ के गए हैं मुख्यमंत्री कि इनको स्टार्ट करने में हमें टाइम लग रहा है।
अभी तो जो सिस्टम में लोग बैठे हैं उनको स्टार्ट करने पे हम लगे हुए हैं, उनका रोज एक आधे का स्टार्टर ठीक करना पड़ता है, तो थोड़ा सा लाइन पे आने लगा है। तो अभी उन्होंने पूरा स्पीड नहीं पकड़ी, और आपका काम कराने लगेंगे तो उतना टाइम लग जाएगा। अभी पुराने इंडस्ट्रियल एरिया को ठीक करने पे लगा हुआ हूँ, तो एक बड़ा मैराथन जॉब है मेरे पास। पर मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ आपका एक एरिया हो और बहुत आसान है, और आपको बहुत रीजनेबली प्रॉपर्टी मिलेंगी, रीजनेबल रेट्स पर मिल जाएंगी। और आप अगर एक ही जगह पे डेवलप करना चाहेंगे तो 81 एकड़ जगह है, और आप खुद ही उसको अप्लाई करके खुद बिल्ड करके लें, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और आप खुद अपने डेवलपर ला के उसको खुद अपने तरीके से डेवलप भी कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया होगा। हम उसके अंदर चाहेंगे दिल्ली की इंडस्ट्री दिल्ली में रहे, हम बहुत बेनिफिट आपको देंगे। मैं लंबा नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। हम आपको सब्सिडी भी देंगे, हम जो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे ग्रीन फील्ड पे, क्योंकि नई इंडस्ट्री एरिया, तो हम आपको उसमें से हम प्लान कर रहे हैं कि जीएसटी भी उसमें ना लगे आपको, आपका जीएसटी रिफंड हो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। हम केवल आपको प्लॉट बेचने वाले नहीं हैं, हम आपको चाहते हैं कि एक बिजनेस मॉडल बेचें जिससे आपको आमदन हो, आपका परिवार खुश हो उसको लेकर, और दिल्ली की आमदन में आप इजाफा करके आएँ। इंडस्ट्री लाइफलाइन है दिल्ली की, उसको जैसे मेरे से पहले कहा गया, सर साहब ने कहा कि अपॉर्चुनिटी हमने मिस की है, बिल्कुल मिस की है, और अब उस अपॉर्चुनिटी को हम मिस नहीं करना चाहते। हम आपके साथ मिलकर इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे, ऐसा मेरी सोच है। अगर आपको समझ में आता हो तो आप ज़रूर एक बार हम दोबारा से बैठते हैं, और मैं आपको चाहूँगा भी कि आप आइए। अभी हम बहुत जल्दी अपने इन्वेस्टर्स मीट भी करेंगे, जब हमारी दिल्ली की हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आएंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी दिल्ली की अच्छी होगी, आप लोगों के हित में होगी, जिससे आपको कोई बेनिफिट मिले। खाली पॉलिसी ये नहीं है कि इंडस्ट्री चलेगी, नहीं, इंडस्ट्री चलने से आपको भी कुछ लाभ मिले, आपको इंसेंटिव्स मिले, ताकि आप इंडस्ट्री वहाँ पे चलाएं दिल्ली में, और उसका लाभ आपको हम कोई दे सकें। और उसका जब आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस का नेचुरली हमें आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसका लाभ नेचुरली सरकार को और स्टेट को मिलता है। तो हम ऐसी पॉलिसी भी लाने जा रहे हैं। वो जब पॉलिसी लाएंगे, इन्वेस्टर मीट भी करेंगे, वहाँ भी हम आप सबको इन्वाइट करेंगे। तो मेरा ये सजेशन है, आप इस पर काम शुरू करेंगे। अगर बापरोला आप देख के आइए, साइड बहुत अच्छी जगह पे है, और बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी भी है, और परमानेंटली आपकी अपनी स्टैब्लिश इंडस्ट्री हो जाएगी। मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ। आज मजबूरी है मेरी, बहुत बाई चांस की बात है कि दिन ही ऐसा सेटअप हो गया कि कोई सिचुएशन आ गई, वरना मैं बहुत खुश होता कि, और मैं तो 2 घंटे का टाइम दिया था इसलिए आप सबको। पर मैं आज के लिए इतने की यहीं माफ़ी मांगता हूँ, आपसे इजाज़त लूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, Thank you very much, Honorable Minister ji. Thank you, sir. Vote of thanks. Everyone, please be seated. We are at the last leg of our event. No, man.
I request everyone to take your seat, please. We just require 5 minutes of yours, please. So Hello. as we approach the एक conclusion मिनट आप लोग सब बैठ जाओ प्लीज़। मैं एमपीएस चड्ढा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा एक टोकन ऑफ लव की हमारी एसोसिएशन की तरफ से आज मास्टर ऑफ सेरेमनी को भेंट करें। यू आर रिक्वेस्टेड। So as we approach the conclusion of this distinguished evening, it is time to express our heartfelt gratitude to all those who have made this gathering a grand success. To formally extend our thanks and appreciation, I now have the honor of inviting a dedicated and respected member of our association, Shri Harpreet Singh Ji, Secretary of Surgical Manufacturers and Traders Association, to kindly come forward and deliver the vote of thanks. We at SMTA are honored and thankful beyond words towards His Excellency Minister of Industry Sardar Manjinder Singh Sirsa Ji and President of Shiromani Akali Dal Delhi State Sardar Mohinder Pal Singh Chadha Ji for providing their valuable time to engage with our association and look into the issues of the medical device industry and our requirements for industrial land for SMTA Medical Device Park. It has been an enlightening experience to hear the visionary and knowledgeable speech from the Honorable Minister, sir, and the kind, benevolent and soul-stirring wise words from the Sikh leadership strongman, Sardar Mohinder Pal Singh Chadha Ji. I request these two prominent and able Sikh leaders to use this opportunity that Guru Sahib Ji has bestowed upon them to take the necessary valiant steps to eradicate the Inspector Raj, which is killing the industry, and bring in policies that are just and fair to the growth and empowerment of trade and industry, especially of the most vulnerable micro units who work with their blood, sweat, and own hard-earned money saved and scrimped from generations, as they are the ones that shall propel the country to rapid growth in the coming future. They need your utmost support and attention, sir. I also requested to Minister Saab, yes, is gone, but still my request remains. I request to the Minister Saab that, as explained earlier by Mr. Jasmeet Ji, that now all medical devices have been brought under the Regulation of Drug Act. Even the act of labeling or repackaging or packaging in packaging a medical device is considered a manufacturing activity under the Rule 3ZB of MDR. So many traders who would earlier buy the finished device from the manufacturer and pack it in their own brand box or put their trademark label and sell it are unable to do so legitimately without having a valid manufacturing license from the drug authorities, who in turn only issue a manufacturing license to units located in an approved industrial area. So that's where we want our industrial area. That's a very basic, important need for us. Our humble appeal is that as this activity of labeling or packing a finished medical device does not involve any use of machines or cause any kind of pollution or residue, the same may be permitted to be done in a commercial area, as already allowed in the Master Plan MPD 2021 for surgical instruments and appliances at serial number 31 under Group B
industries permissible in commercial centers, at least as an interim measure till the time the medical device park is operational, so that a manufacturing license from the drug department can be obtained and these units can carry out their work legitimately. Thank you once again, sir, for your patient hearing and empathy towards our causes and issues. I am further grateful to all our SMTA members, industry colleagues, ladies and gentlemen, for the graceful presence and contribution today for this felicitation program. A special thanks to Dr. Nidhi for comparing the event with grace and elan. Thank you all once again. Thank you. Thank you very much, sir. I warmly invite everyone to join us for fellowship and refreshments. Let this be a time to connect, converse, and collaborate. Thank you for all your presence. Jai Hind. Please join for a tea. Please, everybody join for the tea. Puneet.
Thank